So parts of flower, let's study. I have explained the whole structure of flower by drawing with my hand so that you are able to study in details. This diagram I have drawn, and let's study the parts of a flower. Before I start, please subscribe and share video with the class 12 Parts of students. flower, let's study. So what is a flower? Flower is the reproductive part of the plant. On attaining reproductive maturity, the plants produce flowers. फूल जब पैदा होते हैं, जब प्लांट एक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे आ जाता है, अब वो सीड्स बनाने की तैयारी में है. नाउ द प्लांट इज़ रेडी टू मेक seeds. So before we study the reproduction in flowering plants, must know the structure of a flower. Must have studied it in lower classes also. तो जो फ्लावर है उसकी तो मेन 4 वर्ल्स तुमने पढ़ी हैं, क्लास 11th में भी पढ़ी होंगी और छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी. एंड दीज आर दी petals. Now the first outermost layer is, I am drawing the LS of a flower. आई एम ड्राइंग माई सेल्फ ताकि आप लोग भी ड्रॉ करना सीख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ड्रॉ करके आपको जो है वो वीडियोस दिखा रही हूँ ताकि आपको खुद ड्रॉ करना आ जाए. क्लियर? तो 4 वर्ल्स प्लांट फ्लावर की होती हैं और सबसे बाहर वाली जो है दैट इज़ दी सेपल्स. जो सेपल्स हैं वो किसी भी प्लांट में इस तरीके से आपको हिबिस्कस में दिखता है. जैसे 4-5 सेपल्स हैं, कभी जुड़े हुए हैं, कभी अलग हैं, अलग भी हो सकते हैं. सो ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा, इस तरीके से भी हो सकते हैं. सो ये सेपल्स मिलके पहली लेयर ऑफ द फ्लावर बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द calyx. So the first layer is calyx. Okay, these are sepals, and these are petals. Petals आम लैंग्वेज में भी इन पेटल्स कहते हैं, बट टुगेदर ये बनाते हैं कोरोला. किसी भी प्लांट का कोरोला मीन्स उसके पेटल्स का किस तरीके का स्ट्रक्चर है. क्लियर? किसी का कोरोला बेल शेप का है, किसी का कोरोला पूरा खिला हुआ मीन्स अटैच्ड नहीं है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोलाज यू हैव स्टडीड. तो कोरोला इज़ द नेक्स्ट लेयर. पेटल्स. नेक्स्ट इज़ the third layer, which is attached to the thalamus. The stamen. The upper part is called the anther, and this is called the filament. Together it is called the stamen. All this stamen put together, सभी स्टेमन्स को मिला के क्या कहते हैं? एंड्रोशियम. So these are the stamens. Suppose the plant has many stamens, generally 5 for this plant. So they are attached to this portion is called the thalamus. Thalamus is the stem on which all these floral parts, the sepals and petals are growing. This is the reduced stem. Okay, so the anthers and filament together
if they are 5 in number or 4 in number or 10 in number, they together they are called the androecium. And last layer, which is the innermost layer, is called the pistil. Pistil is the, you can see I have drawn two lobes here. There can be more than two lobes. You can see this kind of stigma. This portion is called the stigma. Now the stigma can be like this, in hibiscus like this. It represents there, these are 5 uh, pistils joined together. So if 5 pistils are joined together, then it is pentacarpellary. And here you can see 2 bicarpellary. It can be 3 tricarpellary. So pistil is also called carpel. This portion is called style, stigma, style, and this portion is called the ovary. And inside the ovary you will see, must have seen, तुम्हारे घर में जो भी फ्रूट्स आते हैं, जो जब आप काटते हो तो उसके अंदर जो बीज निकलता है, दैट इज़ गोइंग टू बिकम, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, ये ही फ्यूचर में जाके सीड्स बनने वाले हैं, और ये ओवरी फ्यूचर में जाके फ्रूट बनने वाली है. जैसे बैंगन है, बैंगन का फ्रूट, क्लियर, घिया का फ्रूट, तोरी, ऑल दीज इनसाइड दी फ्रूट देर विल बी सीड्स. ये सीड्स बनने वाले हैं व्यूज फ्यूचर में. एंड ओवरी, राइपन्ड ओवरी इज अ फ्रूट. बायोलॉजी में एवरीथिंग इज अ फ्रूट, वेजिटेबल्स भी फ्रूट हैं. ऑल दीज टुगेदर, this is called the pistil. And all the layer, since I've told you there can be more than 2, 3, 4, 5, that is called the gynoecium. So last layer is called the gynoecium. So this is all about the structure of flower. The pedicel with which the flower is attached on the main branch is called the stalk is called the pedicel. So these are the parts of the flower from the uh, ls of the flower. But what is inside these, and inside these, let's study. These are the male part, this is the male part of the flower, and this is the female part. And this here the gamete is being produced, and here male gamete is produced, female gamete, male gamete. So the steps in reproduction we will study next. Next lesson will be reproduction in flowering plants. Please subscribe and share video with the students of class 12th. Thank you once again.